Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 9 and the name of our unit is Respecting Others and Appreciating Their Diversity. यानी कि हम लोगों को accept करने की बात कर रहे हैं और हम डाइवर्सिटी यानी कि उनकी डाइवर्सिटी को, उनके तनव्वो को, उनके मुख्तलिफ होने को भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और रिस्पेक्ट कर रहे हैं. सो आज लेक्चर नंबर 5 है विच इज़ द रिव्यू ऑफ द लेसन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड. सो द रीकैप ऑफ द लेसन, हमने प्रीवियस लेक्चर में एक प्रोजेक्ट किया था. हम प्रोजेक्ट में हमने क्या पढ़ा था? सो क्विकली आंसर द क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्पेक्टिंग अदर्स. दूसरों को रिस्पेक्ट करने की क्या जो है वो अहमियत है. वेरी गुड. Okay, my dear students, so these are all the student learning outcomes that we have covered in this unit. So one by one हम एक दफ़ा इनको रिवाइज करते हैं. मैं आपसे साथ साथ क्वेश्चंस भी करूंगी रीडिंग पेजेस के, और बाय द एंड आई विल प्रोवाइड यू विद एन असेसमेंट शीट टू सी के आप लोगों ने क्या क्या कुछ जो है वो सीखा है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल. आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स इक्वल? वेरी गुड. यस. हाउ आर वी इक्वल? Because we all are humans. That is why we are equal. Okay, in lecture number 2, so we discussed that the ways of respecting others. किन तरीकों से आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को respect कर सकते हैं. So what are the ways of respecting others? By greeting them, by giving them gifts, by behaving nicely with them, by showing courtesy, by giving a seat to an elder person in the bus. So these are the different ways of respecting the people around you. So why should we wait for our turn? हमें अपनी बारी का क्यों इंतजार करना चाहिए? So this will create peace in the society. Very good. When should we wait for our turn? हमें कब कब अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए? When you are entering a canteen, when you are entering into the classroom, when you are playing on a swing with your friends. So this is how these are the times when you should wait for your turn. Okay, my dear students, in lecture number 3, we discussed about the importance of respecting others. क्या अहमियत है एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने की. So what is the importance of respecting others? जब आप दूसरों को रिस्पेक्ट करते हैं तो इसकी क्या अहमियत है? This will create peace in the society. You will have patience in you. You will accept others. You will not hurt others' feelings. So इस तरीके से ये अहमियत है एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने की. Then in lecture number 4, we made a project and now is the time for the practice. Evaluation आपकी होगी through this worksheet. So my dear students, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So my dear students, write down your name and the roll number. Are we all equal? What is your language? What are the ways of respecting others? What are the benefits of respecting others? So my dear students, you will pause the video and you will complete it. I hope everybody has finished the worksheet. So my dear students, after finishing it, you will submit it to your teacher. और इसको teachers जो हैं वो marks या grades देंगी to evaluate you कि आप लोगों ने क्या क्या कुछ इस unit से सीखा है. So my dear students, in homework you will do question number 3 given on page number 73. अगर आपने project के साथ ही question complete नहीं किया है तो complete it now and discuss the ways of respecting others with your parents. अब आपने अपने parents के साथ वो तमाम तरीके discuss करने हैं जिनसे आप दूसरों को respect कर सकते हैं, क्योंकि अब आप बहुत कुछ सीख चुके हैं about respecting others. And also tell them that why it is important to respect everybody around ourselves. आपने ये नहीं सोचना कि वो गोरा है, काला है, छोटा है, बड़ा है, फिजिक उसकी कैसी है, किस रिलीजन से ताल्लुक़ रखता है, किस उम्र से ताल्लुक़ रखता है, किस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखता है. यू नीड टू रिस्पेक्ट एवरीवन बिकॉज दे आर ह्यूमंस. सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू विल ऑल्सो डू एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. सो ये ऑप्शंस हैं जिनको आपको पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन को कंप्लीट करना है. वी शुड रिस्पेक्ट अदर्स, टीज अदर्स, हर्ट अदर्स. वी शुड रिस्पेक्ट अदर्स. वी शुड नॉट हर्ट अदर्स while riding on bus, entering class, both. So if there is an elder on a bus, we should sit, give them seat, both. We should give them seat. We should make a line in classroom, canteen, both.
सो माय डियर स्टूडेंट्स, द रैप अप ऑफ द लेसन इज, इस यूनिट में हमने सीखा कि तमाम इंसान इक्वल हैं, हमें उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से हम उन्हें रिस्पेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि पानी पिलाकर, उनसे प्यार से बात करके, अपनी बारी का इंतज़ार करके। और इसके अलावा क्या अहमियत है दूसरों को रिस्पेक्ट करने की, आपकी सोसाइटी बहुत ही खुशगवार जगह बन जाएगी, पीसफुल हो जाएगी, अमन का गहवारा बन जाएगी, और हर इंसान की पर्सनालिटी भी ग्रूम होके बेहतर होती जाएगी। आई होप यू विल अडॉप्ट ऑल दीज गुड क्वालिटीज़ इन योर सेल्फ, और आप अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल भी रखेंगे। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।